Hello students, welcome to Unit 5 Principal Stresses lecture series. आज हम पहला प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे. प्रॉब्लम is in this way. A strained material is subjected to stresses sigma x equal to 110 Newton per mm square tensile, sigma y equal to 47 Newton per mm square tensile, and shear stress 63 Newton per mm square 63 Newton per mm square. So component is subjected to biaxial stresses, that is sigma x equal to 110 megapascal, and sigma x and sigma y are tensile. Sigma y is 47 megapascal, and both are tensile in nature. And on this component there is a torsional shear stress of magnitude 63 megapascal. On horizontal plane the shear stress direction is producing clockwise moment. So on the vertical plane the shear stress is of the same magnitude, that is 63 megapascal, but producing anti-clockwise moment. Now next part of the problem: determine intensity of normal, tangential and resultant stress and angle of obliquity. तो oblique plane हमें दिया है जिसका एंगल है the plane oblique plane inclined at 30 degree to the plane carrying 110 Newton per mm square. जिस प्लेन पे 110 Newton per mm square का स्ट्रेस एक्ट हो रहा है उस प्लेन से ऑब्लिक प्लेन का एंगल है 30 डिग्री. तो इस प्रॉब्लम में थीटा, ऑब्लिक प्लेन का एंगल थीटा है वो 30 डिग्री है, 30 डिग्री दैट इज गिवन. एंड हमें क्या करना है, इस ऑब्लिक प्लेन में जो स्ट्रेसेस एक्ट हो रहे हैं दैट इज नॉर्मल स्ट्रेस सिग्मा एन, टेंजेंशियल स्ट्रेस दैट इज अलोंग द ऑब्लिक प्लेन सिग्मा टी, और रिजल्टेंट स्ट्रेस दैट इज सिग्मा आर, एंड एंगल मेड बाय द रिजल्टेंट स्ट्रेस विद द नॉर्मल स्ट्रेस डायरेक्शन दैट इज फाई, और इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज अ एंगल ऑफ ऑब्लिक्विटी. तो फर्स्ट पार्ट में हमें ऑब्लिक प्लेन पे कितना नॉर्मल स्ट्रेस डेवलप होगा, कितना टेंजेंशियल स्ट्रेस और कितना रिजल्टेंट स्ट्रेस डेवलप होगा, और रिजल्टेंट स्ट्रेस का नॉर्मल स्ट्रेस डायरेक्शन से एंगल कितना है, ये आंसर्स फाइंड आउट करना है. नाउ सेकंड पार्ट ऑफ दिस प्रॉब्लम, आल्सो फाइंड प्रिंसिपल स्ट्रेसेस एंड इट्स ओरिएंटेशन. हमें प्रिंसिपल स्ट्रेसेस, मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस सिग्मा n1 फाइंड आउट करना है, सिग्मा n2 फाइंड आउट करना है, माइनर प्रिंसिपल स्ट्रेस, उसके ओरिएंटेशंस मतलब लोकेशन ऑफ द प्रिंसिपल प्लेन्स, दैट इज थीटा p1 एंगल मेड बाय मेजर प्रिंसिपल प्लेन विद द वर्टिकल प्लेन ऑफ द मेंबर, and theta p2 that is angle made by minor principal plane with the vertical plane. ये आंसर्स भी फाइंड आउट करने हैं. एंड यूज एनालिटिकल मेथड. सो दिस प्रॉब्लम वाज फॉर 12 मार्क्स इन एसी 2019 कोर्स. सो दिस इज द प्रॉब्लम ऑन प्रिंसिपल स्ट्रेसेस एंड दिस प्रॉब्लम वी हैव टू सॉल्व बाय एनालिटिकल मेथड. सो दिस डायग्राम वी हैव टू प्रिपेयर फ्रॉम द गिवन प्रॉब्लम स्टेटमेंट. गिवन प्रॉब्लम स्टेटमेंट से ये डायग्राम हमें ड्रॉ करना है. This is a member and it is subjected to tensile stresses sigma x equal to 110 megapascal, sigma y equal to 47 megapascal. Both these sigma x and sigma y are tensile, and the shear stress is tau. On horizontal plane shear stress is producing clockwise moment. So on the vertical plane shear stress is producing anti-clockwise moment and its magnitude is same, that is 63 megapascal. और ये ऑब्लिक प्लेन हमें कंसीडर करना है AB, जिसका एंगल वर्टिकल प्लेन से एंगल है 30 डिग्री. और इस प्लेन पे जो नॉर्मल स्ट्रेस और टेंजेंशियल स्ट्रेस, रिजल्टेंट स्ट्रेस और एंगल फाई, ये फर्स्ट पार्ट में हमें फाइंड आउट करना है. विद दूसरे पार्ट में प्रॉब्लम के सेम का मेंबर है. इट इज सब्जेक्टेड टू बायएक्सियल स्ट्रेसेस अलोंग विद द शियर स्ट्रेस टाउ. नाउ इन दिस केस theta p1 is the angle made by the major principal plane. So in the diagram pq and rs, these are major principal plane on which major principal stress that is sigma n1 is acting, and angle of this major principal plane, this plane with the vertical plane is theta p1. So theta p1 is the angle of major principal plane, and theta p2 is the angle of minor principal plane. We know minor principal plane is perpendicular to the major principal plane. So theta p2 is the angle made by the minor principal plane. So here minor principal planes are QR and PS. So their angle is theta p2, and the normal stress sigma n2 is acting on the minor principal plane, and that sigma n2 is called as a minor principal stress. तो प्रॉब्लम दो पार्ट में. पहले पार्ट में हमें गिवन डेटा क्या है, सिग्मा x इक्वल टू 110 न्यूटन पर mm स्क्वायर, सिग्मा y इक्वल टू 47 न्यूटन पर mm स्क्वायर, बोथ आर टेंसाइल, टाउ इज इक्वल टू 63 न्यूटन पर mm स्क्वायर. तो पहले पार्ट में प्रॉब्लम क्या, हमें नॉर्मल स्ट्रेस ऑन एनी ऑब्लिक प्लेन और ऑब्लिक प्लेन विच इज इंक्लाइंड एट 30 डिग्री विद द वर्टिकल प्लेन, उस प्लेन पे नॉर्मल स्ट्रेस का मैग्नीट्यूड कितना है, दैट इज सिग्मा n. टेंजेंशियल स्ट्रेस का मैग्नीट्यूड कितना है, रिजल्टेंट स्ट्रेस का मैग्नीट्यूड कितना है, और एंगल मेड बाय द रिजल्टेंट स्ट्रेस विद द नॉर्मल स्ट्रेस डायरेक्शन दैट इज फाई, वो कितना है, ये कैलकुलेट करना है. उसके साथ सेकंड पार्ट में हमें मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस सिग्मा n1 का मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करना है, सिग्मा n2 माइनर प्रिंसिपल स्ट्रेस इसका मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करना है,
और दोनों प्रिंसिपल प्लेन के एंगल्स, थीटा p1 is the angle made by the major principal plane with the vertical plane of the member, and theta p2 is the angle made by the minor principal plane with the vertical plane. So in the first part is concentrated on oblique, finding out the stresses on oblique plane which is inclined at 30 degree to the vertical plane. और आज हम ऑब्लिक प्लेन पे स्ट्रेसेस कैलकुलेट करेंगे। नॉर्मल स्ट्रेस ऑन एनी ऑब्लिक प्लेन दैट इज सिग्मा एन, sigma n is equal to sigma x plus sigma y by 2 plus sigma x minus sigma y by 2 into cos of 2 theta plus tau sin 2 theta. Sigma n is equal to sigma x is 110 plus sigma y is 47 divided by 2 plus sigma x is 110 minus 47 divided by 2 into cos of 2 into 30 is a 60 degree. So cos of 60 degree plus tau is 63 multiplied by sine of 2 into 30 is a sine of 60 degree. So from that we can calculate a normal stress. Normal stress after calculation it comes out sigma n is equal to 148.80 Newton per mm square. So this is our first answer for this problem by analytical method. Normal stress on oblique plane is 148.80 Newton per mm square. Then second answer is tangential stress on this oblique plane. So sigma t is equal to sigma x minus sigma y by 2 into sine of 2 theta minus tau into cos of 2 theta. Putting the values, sigma t is equal to 110 minus 47 divided by 2 into sine of 60 degree minus 63 into cos of 60 degree. तो सिग्मा टी हमारा आंसर आ रहा है -4.22 न्यूटन पर mm square. So tangential stress on this plane, oblique plane, which is inclined at 30 degree with the vertical plane, is -4.22 Newton per mm square. So this is our second answer. From this normal stress and tangential stress, we have to find out the resultant stress on oblique plane. Resultant stress on oblique plane. So resultant stress on oblique plane is sigma r is equal to So sigma r is equal to root of sigma n square plus sigma t square. So putting the values, sigma n is 148.80 square plus sigma t is minus 4.22 square. So this is minus square, this term will become plus. So sigma r is equal to 148.86 Newton per mm square. This is the resultant stress in this case. So next step is calculate the angle made by resultant stress with the normal stress direction. So tan of phi is equal to sigma t upon sigma n, where sigma t is a tangential stress and sigma n is a normal stress. So phi is equal to tan inverse of sigma t is 4.22 upon sigma n is 148.80. So phi angle we get 1.62 degree. So this is the angle made by the resultant stress with the normal stress direction for this problem. Now the second part of the problem, that is fifth step, we can say, calculate the major principal stress, that is sigma n1. So sigma n1 is equal to sigma x plus sigma y by 2 plus root of sigma x minus sigma y by 2 whole bracket square plus tau square. So sigma n1 is equal to, by putting the values, sigma x 110 plus sigma y is 47 divided by 2 plus root of 110 minus 47 divided by 2 whole bracket square plus 63 square. तो मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस सिग्मा n1 आ रहा है 148.94 न्यूटन पर mm square. This is our fifth answer for this problem. Major principal stress acting on this component is 148.94 Newton per mm square. Now sixth step is to calculate minor principal stress, that is sigma n2. Sigma n2 is equal to sigma x plus sigma y by 2 minus root of sigma x minus sigma y by 2 square plus tau square. So putting the values, sigma x equal to 110 plus sigma y 47, 110 plus 47 divided by 2 minus root of 110 minus 47 by 2 square plus 63 square. So sigma n2 का वैल्यू आया 8.06 न्यूटन पर mm square. This is our sixth answer for this problem, sigma n2. So magnitude of major and minor principal stress we have calculated. Now seventh step is to calculate the orientation of this principal plane. So orientation means angles made by this principal plane with the vertical plane. So for that, formula is tan of 2 theta p is equal to tau upon sigma x minus sigma y by 2. So from that, 2 theta p is equal to tan inverse of this value. Tau is 63 upon sigma x is 110 minus 47 divided by 2. So 2 theta p is equal to tan inverse of this value is a 63.43. Therefore, theta p, that is theta p1 angle, we get first. So theta p1 is half of 63.43, that is 31.72 degree. So this is theta p1. Theta p1 is nothing but angle made by the major principal plane with the vertical plane. So this is a location of the major principal plane with respect to vertical plane. Now minor principal plane, theta p2 is equal to theta p1 plus 90 degree, because we know major and minor principal planes are always at 90 degree to each other.
So theta p2 is equal to theta p1, that is 31.72 plus 90 degree. So this angle comes 121.72 degree. So angle made by the minor principal plane with respect to vertical plane is 121.72 degree. So this is seventh answer for this problem. Now the last part, which is not asked in the problem, but for sake of convenience, ये अगर पूछते हैं मैक्सिमम मिनिमम शियर स्ट्रेस का वैल्यू, तो हम वो कैसे कैलकुलेट करना है वो देखेंगे. Tau max or tau minimum is equal to plus or minus sigma n1 minus sigma n2 by 2, where sigma n1 is a major principal stress जो हमने कैलकुलेट किया था 148.94. 148.94 is sigma n1 and sigma n2 is 8.06. So maximum or minimum shear stress is calculated by plus or minus side, sigma n1 minus sigma n2 divided by 2. So putting the value of major and minor principal stress, tau max or tau minimum is equal to plus or minus 148.94 minus 8.06 divided by 2. So maximum shear stress is plus and minimum tau minimum is minus, and it is 70.44 Newton per mm square. So this is the answer for maximum and minimum shear stress developed in a component when it is subjected to combined stresses, that is sigma x, sigma y and tau. Now ninth step is angles made by the shearing plane. Angles made by a shearing plane. There are two shearing planes which are perpendicular to each other. One shearing plane carries maximum shear stress and another shearing plane carrying minimum shear stress. So angles, to calculate the angles made by these shearing planes with respect to vertical plane, we have to use this formula. Tan of 2 theta s is equal to minus of sigma x minus sigma y by 2 upon tau. So here angle is this angle is minus, so we have to use the formula tan of 180 minus 2 theta s is equal to minus tan 2 theta s. So we have to use this formula, tan of 180 minus 2 theta is equal to minus tan 2 theta, because this angle is minus. So in order to remove this sign, we have to take this formula into consideration. So tan of 180 minus 2 theta is equal to minus tan 2 theta. So tan of 180 minus 2 theta s is equal to, this will be minus into minus will become plus. Sigma x is 110 minus sigma y is 47 divided by 2 divided by tau is 63. So 180 minus 2 theta s is equal to tan inverse of this value, and tan inverse of this value is 26.56. So rearranging the terms, 180 degree minus 26.56 is equal to 2 theta s1. Therefore, we can calculate theta s1, half of this, and theta s1 is, after calculation, it is 76.72 degree. What is theta s1? Angle made by maximum shear plane with the vertical plane. And second angle is theta s2, angle made by the minimum shearing plane, is equal to theta s1 plus 90 degree. So 76.72 plus 90 is 166.72 degree. So in this way we have calculated the angles made by the shearing plane with respect to vertical plane. इस प्रॉब्लम में ये आंसर्स पूछे नहीं है, लेकिन हमने अगर ये प्रॉब्लम में आता है तो आपको इस तरह से ये कैलकुलेट करना है. इस प्रॉब्लम में ये आंसर्स हमें पूछे नहीं है, इसलिए इस प्रॉब्लम के लिए ये कैलकुलेशंस अप्लाई नहीं होंगे. लेकिन अलग प्रॉब्लम में अगर ये मैक्सिमम मिनिमम शियर स्ट्रेस के मैग्नीट्यूड और उसके एंगल्स अगर फाइंड आउट करने हैं तो इस तरह से हमें फाइंड आउट करना है. So theta s1 and theta s2, these are the angles made by maximum and minimum shearing plane with the vertical planes respectively. भी shearing plane कैलकुलेट करने का ये एक फॉर्मूला होगा, ये एक फॉर्मूला होगा. दूसरा शॉर्टकट मेथड ये है, शॉर्टकट मेथड थीटा s1 इज इक्वल टू थीटा p1 प्लस 45 डिग्री. पहले हमने थीटा p1 फाइंड आउट कर लिया, एंगल मेड बाय द मेजर प्रिंसिपल प्लेन. उसमें अगर 45 डिग्री एंगल ऐड कर देंगे तो थीटा s1 मिल जाएगा. सो इन दैट केस ये फॉर्मूला यूज करने की जरूरत नहीं है. तो थीटा s1 इज इक्वल टू थीटा p1 प्लस 45 डिग्री. सो थीटा s1 इज इक्वल टू थीटा p1 था 31.72 डिग्री प्लस 45 डिग्री ऐड करेंगे तो एंगल सेम आता है 76.72 डिग्री. या थीटा s1 इस फॉर्मूले से 76.72 डिग्री आया था, यहाँ पे भी ये सेम आ रहा है. तो ये शॉर्टकट फॉर्मूला है, ये शॉर्टकट फॉर्मूला आपको जो अच्छा लगता है वो आप ध्यान में रखो. थीटा s1 इज एंगल मेड बाय द मैक्सिमम शेयरिंग प्लेन एंड इट इज 76.72 डिग्री. थीटा s2 इज इक्वल टू थीटा p2 प्लस 45 डिग्री. थीटा p2 था 121.72 डिग्री प्लस 45 डिग्री, तो आंसर आया 166.72 डिग्री. सो थीटा s2 बाय दिस फॉर्मूला is also same 166.72 degree, and by this shortcut formula it is also same. तो ये दो फॉर्मूले आप ध्यान में रख सकते हो. थीटा s1 is equal to theta p1 plus 45 degree and theta s2 is equal to theta p2 plus 45 degree. So this is all about this problem. See you in the next lecture. Same problem we will solve by graphical method, that is Mohr circle method, and we'll compare the answer by analytical and graphical method. So you can solve this same problem by analytical method and graphical method in the exam में analytical method को और graphical method का प्रॉब्लम रहता है, तो आपको जो कन्वीनियंट लगता है
एनालिटिकल मेथड ज़्यादा एक्यूरेट है, ग्राफिकल मेथड से ज़्यादा एक्यूरेट है। ग्राफिकल मेथड में ग्राफिकल कंस्ट्रक्शन है तो आसान लग सकता है। आपको डिसाइड करना है आपको कौन से मेथड से प्रॉब्लम सॉल्व करना है। अगर स्पेसिफिक क्वेश्चन आता है कि सॉल्व बाय एनालिटिकल मेथड, तो उसी मेथड से आपको प्रॉब्लम सॉल्व करना होगा। या ऐसे स्पेसिफिक पूछा जाता है कि सॉल्व बाय मोर सर्कल मेथड, तो वही उसी मेथड से आपको प्रॉब्लम सॉल्व करना है। वहाँ पे क्रॉस ओवर नहीं करना है, नहीं तो मार्क्स नहीं मिलेंगे। तो see you in the next lecture on a same problem by graphical method, that is more circle method. So thank you very much.